हमेशा की तरह हम एक बार फिर से इस वीक के पावरफुल सेशन के साथ हम सभी लोग आज जुड़ गए हैं और हमेशा की तरह हम एक विशेष टॉपिक लेके चलते हैं और आज हम एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ गए हैं। कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं थोड़ा मिस हो गया था कुछ सेकंड पहले। हमेशा की तरह आप मुझे तो जानते ही हैं, मेरा नाम राज आलमपुर है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। रोहतक सिटी हरियाणा में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और आज का टॉपिक हमने जो चुना है वो मेंटल हेल्थ के साथ जो विमेन को यदि हम ऐड कर दें, विमेन एंड मेंटल हेल्थ, इस टॉपिक को लेके हमारे बीच में आज के रिसोर्स पर्सन आए हैं जो अपने आप में एक विशेष उपलब्धियों के साथ, एक विशेष संघर्ष के साथ लोगों के जीवन में वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। आज के रिसोर्स पर्सन के बारे में बताऊं उससे पहले मैं सभी पार्टिसिपेंट का वेलकम करता हूं और मेरी आवाज आप सभी को क्लियर आ रहा है, बस ऐसा आप कमेंट में मुझे बताएं और फिर हम इसे आगे बढ़ने के लिए इस काम को, हम इस गतिविधि को अंजाम देने वाले हैं। बस एक दो कमेंट मुझे मिल जाए तो मुझे ठीक से पता लगे कि हम लोग लाइव ठीक से आ गए हैं। मुझे मिल ठीक से पता। राइट राइट राइट। हाँ, ऋतिक का हाँ कमेंट मिला हमें, ठीक है। तो आज के रिसोर्स पर्सन के बारे में मैं बताता हूँ, आप सभी पार्टिसिपेंट का मैं वेलकम करता हूँ। आप एफसी सैम हैं, आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और आप बॉम्बे की तरफ, मतलब शायद बॉम्बे के अंदर ही आपने बताया मुझे, वहाँ से आप काम कर रहे हैं और ऑनलाइन यानी ऑल ओवर इंडिया और शायद इससे बाहर के लोग भी आपसे कनेक्ट होते हैं। आपकी वैसे तो काउंसलिंग साइकोलॉजी में हर एक तरीके की आप काउंसलिंग देते हैं, बट इसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जैसे कि न्यूरो डाइवर्जेंट हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एडीएचडी हो गया, एएसडी जैसी चीज़ें हो गई। आप विमेन हेल्थ के साथ तो काम करते ही करते हैं, साथ के साथ फैमिली में भी थेरेपी को लेके आप काम करते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी, मैंने पर्सनली ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी जो राइटिंग स्किल जिसे हम बोले उससे आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट, इंस्पायर भी करते हैं और काउंसलिंग और थेरेपी और साइकोलॉजी से जुड़ी हुई विभिन्न तरीके की गतिविधियों से लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड करते हैं। हम पर्सनालिटी केयर फाउंडेशन की तरफ से मैडम आपका हम वेलकम करते हैं कि आपने हमारे छोटे से निमंत्रण पे उसे स्वीकार किया और ना स्वीकार किया कि लोगों के बीच में आके आप आज के दिन, मैं बताऊं कि देखा जाए तो सुबह से शाम तक मैं भी ठीक 15 मिनट पहले ही अवेलेबल हो पाया हूं, कोई इमरजेंसी, और सेम मैडम ने मुझे पहले बताया कि आज थोड़ा सा इनको इस तरीके से है कि हम इसे पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन मैडम ने मैनेज किया। मैडम आपका हम वेलकम। Thank you so much. I mean, I'm going to use interchangeably use English and Hindi. I hope I'm audible to you. Give me a thumbs up if I am on the comment section. Hello. All right. Okay. So, like today we're going to talk about a very important aspect, mental health and mental health in women. So most of the time हम थोड़ा सा उसको लाइक हम शायद से उस चीज को हम ओवरलुक कर जाते हैं, मेंटल हेल्थ को एक ओवरलुक करते हैं. आई मीन फॉर women it's altogether a different aspect. Okay, what is mental health? I think I've been talking about mental health a lot. What exactly is it? Mental health का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कि I'm free from depression and I'm free from anxiety, PTSD, etc. It is basically when we are not really experiencing absence of any sort of mental health disorder.
It's also about how we act, we speak, we feel. It's all about our thoughts. It's about how we think. Everything. Everything's about mental. And I think a lot of times we undermine the importance of a mental health. कई बारी ऐसा भी होता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेस में सब हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो जाती है मगर इस टॉपिक को लेके ज़्यादा इस चीज़ में चर्चा नहीं होती है which is sadly something that we need to bring it up and of course it is a very important aspect क्योंकि if your mental health on point there are chances your physical health is also good but if your physical health is down your mental health will also be down it's like proportionately connected so today we're going to talk about some very common aspects of women's health. I think most people might know it. I'm just going to talk it out, or I'm just going to reiterate so that it's more evident out there. One of the major health related, health related concerns in women are menstruation related problems. Menstruation is basically a cyclic event that takes place in terms of the reproduction, wherein a lot of changes are going on in females physical body and also हम ये चीज भूल जाते हैं फिजिकल बॉडी के साथ साथ यू ऑल्सो एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंसर्न कभी कभी इरिटेबिलिटी होता है कभी कभी आउट ऑफ नो वेरी फील hot flash anger irritability and you just feel like you don't want to do anything you just don't want to get up out of bed and all those things and then there are other menstruation related concerns um, dysmenorrhea हो गया, they can be PCOS, PCOD, etc. And then we come to a very important aspect related to women is infertility. There are lots of things that we miss out in terms of infertility. It is not just, matlab, of course, infertility is basically pure the inability to conceive, or whether it can be something that's physically or genetically present. However, it can create a lot of mental health and social struggles, especially in a country like India, wherein family, having children are considered as really great milestones. It can be one of the reasons why women or families feel a lot down because unable to conceive can bring about a lot of um, extremely heavy feelings that can be quite negative at times. Also, one of the other very common problems that women face is thyroid-related problems. If you know, thyroid is a gland, and it sort of affects your mood, affects your fluctuations. It can be hyperthyroid, it can be hypothyroid. You can look it up on Google, of course. I'm just sort of putting it together, just that sit together. Um, so now what does the thyroid do? It's supposed to help you with the hormone function, but sometimes जब उसका functioning ऊपर नीचे हो जाता है, so there is a weight gain or there is a weight loss. So there's still, I mean, there is a lot of appetite related concerns there and tiredness and etc. I think most women suffer with thyroid, especially in India. So if you look at the statistics, that's how it is. Then comes another problem like another concern which is very prominent that is breast cancer. And females should actually, after 25, they should go for a screening for sure. That is because in India, this is the second most reason why women in India die. And there are also a lot of stigma related to cancer. बहुत ही कुछ मतलब इसी के बारे में बहुत preconceived notions होते हैं कि कैंसर मतलब इट्स कम्युनिकेबल इट कैन नॉट बी ट्रीटेड ऐसा कुछ नहीं होता है अगर उसके राइट स्टेज में अगर हम हेल्प सीख करें तो कैंसर इज ऑल्सो क्योर देन कम्स सेक्सुअल हेल्थ एंड ब्लैडर इश्यूज वेरी कॉमन बट कोई इसके बारे में बात नहीं करता है क्योंकि दिस आर ऑल स्टिग्मा और टैबू और concerns that Bhargav affects you. How can you talk about something like that? So most women or most females find it very difficult. Most people with vagina find it very difficult to talk about a certain term, a certain thing that is related to their health. Now, now we come into the straight my specialty area that is mental health related concerns. In one of the very common problems is depression. Now हम ये वर्ड को सुन के ऐसे थक जाएंगे तो हर जगह से ऐसे ही फेंक देते हैं उसको कहीं पे भी लगा लेते हैं ऐसा नहीं होता है डिप्रेशन इज वेरी
very important issue that needs a lot of care, and women go through a lot of changes. Uh, uh, I'm just giving an example. I'm just wanting you to imagine here. एक फीमेल बॉर्न होती है, उसके बाद उसको मेंस्ट्रुएशन होता है, उसमें भी बहुत सारे मेंटल हेल्थ कंसर्न्स होते हैं। फिर इन इंडियन फैमिलीज की शादी होती है, new changes come into her life, that she's going to be a wife, is going to be a daughter-in-law, new changes are coming in. Then there are changes related to you know uh, conceiving. If she becomes a mother, then it is a lot of mental health concerns. Then if she doesn't become a mother, there's another kind of mental health concerns. उसके बाद when she's progressing throughout the years, when she's about to finish her menstrual cycle, then comes the menopause. That becomes another concern for most women. Sadly, women also don't talk much about it, and most people also don't encourage women to talk about it. But this is your chance to actually understand that women at some point of time go through lots of mental health changes, and it is always a good idea to help them, make them understand that it is okay, that you're there with them. One of the other concerns I also want to mention is most women also go through what we call as postpartum depression. दैट इज जब बच्चे देने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद, जो उनको 1 से 2 डेढ़ साल जो उनके अंदर की मानसिक स्थिति होती है, वो शायद से एक फीमेल दूसरों को बता नहीं पाएगी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट नीडेड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिजिकल, इमोशनल support needed for a women, and it is always a good idea to always check on new mothers, because they are high on different kinds of emotional energy that you probably cannot understand, because एज़ अ सोसाइटी हम क्या सोचते हैं कि एक माँ है, माँ ने तो ये सब करना ही चाहिए, उसके पास क्या बड़ी बात होती है। अगर एक जो लड़की जो नई-नई माँ बन रही है, उसके लिए ये सब कुछ नया है, उसका बॉडी चेंज हुआ है, उसका आई मीन उसके अंदर लाइक देयर आर सो मच पेन हियर एंड देयर, पता नहीं कहाँ-कहाँ से सुबह-सुबह उठते हैं, यहाँ पे दर्द होता है, शाम को उधर दर्द होता है, देन देयर इज़ अ चाइल्ड टू टेक केयर ऑफ, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। So if a mother is healthy mentally and physically, it is pertinent, it is proportionate that the whole family is healthy mentally and physically. Then we come to the next concern, that anxiety. If in India there is a man who is anxious, there are two women who are anxious. So it's twice likely that a woman gets affected by anxiety in India, and which is why it is very important that we understand this, that anxiety is not like मुझे worry हो रहा है, मुझे tension हो रहा है. When does anxiety become a concern? Then आपका जो जो घरेलू काम है या फिर जो भी काम आप हर दिन करते हो, उस चीज़ से कर नहीं पाते हो, उसको ही आप कर नहीं पाते हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हो, वो एक प्रॉब्लम है, उसके लिए आप हेल्प ज़रूर सीख सकते हो। देन कम्स हाउ वरी ही नहीं होता है, उसमें एग्ज़ॉस्टमेंट, टायर्डनेस होता है, एक्सट्रीम टायर्डनेस, मतलब बस हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है एंड ऑल दिस। Then we come into very important aspect is PTSD, and PTSD is post traumatic stress disorder. अब ये this is a very technical term, to be very honest. आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए बताती हूँ, किसी भी चीज़ जिसमें बहुत ही मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हुए कोई भी चीज़ ऐसे हो जाए, लाइक फॉर एग्जाम्पल accident, or let's say um, any sort of massive big change, तो उसमें क्या होता है, इसकी इसकी उस प्रॉब्लम के रिलेटेड अपने लाइफ में आने वाले चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा घबराहट होना, नींद नहीं आना, डर लगना, या फिर मतलब सपने में भी बुरे-बुरे सपने आने, एंड रात को सोने में प्रॉब्लम, या जागने में प्रॉब्लम, या फिर there are lots of problems which sort of, I mean, it's very easily under I'm saying these, but these are very important problems that happen with women who experience PTSD. Um, so they can also affect your memory. It can also affect your memory, your daily functioning to a very great extent. It can also affect how you look at yourself, how you look at other people around. Then comes eating disorder. Eating disorder is one of the most common disorders. So sorry to interrupt, but there are some comment related to your voice.
इशू। सो मैं ऑडियंस से एक बार जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो आवाज़ ठीक से नहीं शो कर रहा है? हमारी एंड से तो सब सही चल रहा है। नीचे एक दो कमेंट आ रहा है, तो क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मैम की? एक बार प्लीज बताएं, कहीं मैम सब कुछ बताएं और फिर लास्ट में आप लिखें हमें कुछ समझ नहीं आया क्योंकि आपकी आवाज़ ही नहीं आई। एक कमेंट आया था, बट हमारे एंड से अभी सही आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, थोड़ा कम आ रही है, वो एक अलग बात है। हाँ, एक बार आप प्लीज कमेंट में बताएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यस वॉइस इज नॉट क्लियर, बट थोड़ी कम आ रही है ना? वॉइस इज नॉट क्लियर। कमेंट तो ऐसे आ रही हैं। मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं है क्या आप लोगों को? मैम, आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है क्या? हाँ, आ रही है आवाज ठीक है। वॉइस इज नॉट क्लियर, बट आमने सामने तो सही सुन रहा है, बीच में ऑसम भी आ रही है, इतनी आवाज़ क्लियर क्लियर। इट इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस फ्रॉम माई साइड, इट इज डिस्टर्बेंस, बट मैं घर पे हूँ तो मैं इतना मैनेज कर रहा हूँ आज। बट ये है कि मैं म्यूट हो जाता हूँ, बट मैम की आवाज़ आ रही है ठीक से। एक बार आप I'll मैम आप देखिएगा और I'll नीचे hold this कमेंट में very आप बता दें। close to me so it's audible. Is it better now? Okay. Is it better now? Okay, great. क्लियर So, क्लियर, हाँ हाँ हाँ, यहाँ all क्लियर। right, all right, great. So I would just say that anxiety, um, PTSD, depression are one of the most common concerns that female actually experience. And yeah, I'm audible. Um, right. So next is eating disorder. The the problem with eating disorder is हमको लगता है सिर्फ खाना ज़्यादा खाना खाने में प्रॉब्लम होता है, like there is a lot of body image related concerns. Body image माने तो like how you want, स्पेशली फीमेल्स पे ये बहुत ही ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं सोसाइटी की तरफ से कि फीमेल पतली होनी चाहिए, येट हर यू नो her physique has to be like curvy and all those things, and it can create a lot of body image related issues for 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 females who are growing up, for young female young girls. ये सब um, it creates extremely difficult expectations which females try to live up to it. बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि फीमेल्स माइट बी एक्सपीरियंसिंग एनीमिया येट खाना नहीं खाएंगे क्योंकि दे हैव दिस एक्सपेक्टेशंस ऑफ बीइंग वेरी थिन, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, सब उसके लिए भी बोलते हैं ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी बोलते हैं. So there is a lot of expectation when it comes to females, whether you have given birth or not, whether you have whether you have whether you are 10 years or 20 or 30, a female should be fit and fine and always having a smile on her face. That is I think it's a very heavy expectation that comes from the society. However, it leaves a lot of impact on a female. तो इसमें क्या होता है कि you might end up eating a lot, binge eating बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा खाना खाना, and it can also lead to problems such as बिल्कुल भी खाना नहीं खाना, उसको हम एनोरेक्सिया. अभी ये जो वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ उसके इसका मतलब ये नहीं है कि आपने थोड़ा खाना कम खाया तो आपको एनोरेक्सिया है. ये सब आप क्लिनिकली आप उसको टेस्ट करवाइएगा एंड देन ओनली फिक्स इट, देन ओनली कम अप कि हाँ मेरे को ऐसा है. नहीं तो दिस इज फूलिशनेस. प्लीज डू नॉट एंड अप labeling yourself. Okay. Then also comes bulimia. Bulimia क्या होता है? You eat a lot and then you puke yourself, you purge yourself out. All right. Okay, fine. Okay, Apsi, you've told us what all the common mental health concerns in women. क्या करें इसके बाद? Very, very some very simple, some very simple tips I'll tell you. One is eat right. जब आप खाना खाओगे तो मेक श्योर आपके प्लेट में एटलीस्ट 2 से 3 डिफरेंट कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो एटलीस्ट. Try to eat a very healthy diet. Then second is sleep. अभी सोशल मीडिया का जो एज है, जो डिजिटल एज है, it becomes very difficult to not sleep on time or to sleep say 7 to 8 hours on time. But I'll tell you what, one of the easiest yet
non-achievable goals that comes is not sleeping on time, and इसमें से you I mean it creates a lot of more problems. Then exercise, move yourself. Um, you might think exercise is all about physical fitness. ऐसा नहीं होता है. Your brain also gets really activated when you exercise. एक बार just try करना, कल सुबह सुबह जाके just 10-15 मिनट just चलना, brisk walking करना. You will feel your brain is on a fresher note, and that is what your physical exercise does to your body and your mind too. Then comes relaxation. uh, चलो ठीक है, खाना भी हो जाएगा, नींद भी प्रॉपर हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगा, मगर एक चीज जो फीमेल्स बहुत कम करती है वो रिलैक्सेशन. सोते समय में भी वो ये सोचती है कि मेरे बच्चे ने खाना खाया है कि नहीं, मेरा बच्चा सो रहा है कि नहीं, मेरे मेरे हस्बैंड सो रहे हैं कि नहीं, एंड जब मेरे फैमिली सो रहे हैं कि नहीं. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ. थोड़ा समय अपने लिए लेने से अपने को भी रिलैक्सेशन होता है, अपने घर वाले को भी रिलैक्सेशन होता है. एंड इट इज नॉट सेल्फिश टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अपना अपना ख्याल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. एंड it is important that you take some time. कुछ भी मत करो, चलेगा. You don't have to go for hobbies, kitty party, etc. To to feel free, to feel relaxed. All you have to do is spend some 10-20 minutes अपने साथ. uh, just sit with yourself, understand, look at the nature, or simply do what you like. आपको अगर गाना सुनना पसंद है तो गाना सुनो, अगर आपको गाना गाना पसंद है तो गाना गाओ, अगर आपको कुछ खाना बनाना पसंद है तो वो करो. जो चीज आपको पसंद है वो आप अपना 10-15 मिनट आप सिर्फ अपने साथ डेट पे जाओ. आप सिर्फ अपने साथ अपॉइंटमेंट लो, सिर्फ अपने साथ थोड़ा समय बिताओ. एंड believe me, you will experience a lot of change. Try this for a month and you will see how well you feel. Next is important aspect. Go for regular checkups. फिजिकल हो, मेंटल हेल्थ हो. अगर रेगुलर चेकअप्स के लिए जाओगे तो यू विल ओनली फील फाइन, एंड इट इज नॉट टू कंफर्म यू हैव मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स. इसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट योर सेल्फ. अगर आप 25 years प्लस हो तो इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गेट योर सेल्फ फुल बॉडी चेकअप एंड अदर काइंड्स ऑफ screening done. It helps prevent a lot many mental health and physical health concerns. Now, okay, fine, Apsi, you told me that this is what very genuine, very generic. अब ये बताओ, how do we um, how do we know that how do we know when to seek help? If you are experiencing persistent sadness, अगर आपको all the time you feel sad, you feel like crying without reason, करते कुछ करते करते तब रोना आ जाए, एंड यू फील होपलेस, हेल्पलेस, कुछ नहीं हो सकता मेरा, मेरे साथ मेरे को कोई हेल्प नहीं कर सकता. अगर ऐसे थॉट्स आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली रन करते हैं तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू शुड सीक हेल्प. वार्निंग साइंस है, प्लीज हेल्प हेल्प सीक कर लीजिएगा. एंड अगर आपके मूड ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं, एनर्जी भी, आज आप एनर्जी टू मच ऑन एनर्जी, टुमारो यू टू लेस ऑन एनर्जी, दैट इज ऑल्सो वार्निंग साइन. अगर आपकी नींद के पैटर्न्स ऊपर, मतलब कभी किसी दिन आप ज़्यादा सो रहे हो, किसी दिन कम सो रहे हो, ये भी एक कंसर्न है. आप इसके लिए हेल्प सीक करेगा. नेक्स्ट इज वेट गेन ऑल्सो. इफ यू एक्सपीरियंस सडनली आउट ऑफ नोवेयर कुछ किए बिना है वेट गेन और वेट लॉस हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम. देन इफ यू एक्सपीरियंस और इफ यू आर डूइंग मिसयूज ऑफ सब्सटेंस जैसे अल्कोहल, smoking, drugs, etc. That is also a massive concern. Please seek help. Then अगर आपको excessive, जब भी देखो चिंता होती है, भरी होती है, स्ट्रेस होता है, ये भी एक साइन है कि आपने जरूर मदद पूछना है, लेना है. Then comes suddenly इधर उधर शरीर में कहीं ना तो कहीं अंग अंग में दर्द हो, आउट ऑफ नोवेयर सर दर्द होने लगे, या फिर पेट में टमी प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम. एंड अगर कुछ किए बिना, कुछ मीन्स उटपटांग खाए बिना, अगर इफ यू फील लाइक योर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, देन दैट इज ऑल्सो कंसर्न, सीक हेल्प.
if you feel your anger, your irritability, your frustration ज़्यादा ही कुछ suddenly out of nowhere बढ़ रहा है, वो भी प्रॉब्लम है। अगर आपको सिर्फ अपने साथ ही रहना पसंद है, मतलब सोशल विड्रॉल करना, मतलब कहीं बाहर नहीं जाते हो, अपने साथ ही रहते हो, किसी चीज़ का भी मन नहीं करता है, पहले जो चीज़ सब करते थे उस चीज़ का मन ही नहीं लगता है, अगर ऐसा हो तो दैट इज़ ऑल्सो साइन, दैट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न, प्लीज़ सीक हेल्प। One major, it's not the least, but of course it's the last, that one of the concerns that you definitely need help is अगर by chance भी अगर दिमाग में आ रहा है काश मैं अगर मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, काश मैं मर जाती या फिर काश यू नो दिस इज़ आई जस्ट हैविंग सुसाइडल फीलिंग्स, सुसाइड थॉट, और अपने आप को मारने का या अपने आप को हर्ट करने का अगर ऐसे कोई भी थॉट्स हों, तो आप बिल्कुल सीक हेल्प, आप बिल्कुल हेल्प सीक करिएगा। और ये सिर्फ़ फीमेल्स के लिए नहीं है, मेल्स के लिए भी ऐसा है। कभी भी आपको किसी भी चीज़ में अगर अ, आप सिर्फ मरना चाहते हैं, जल्दी से जाना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ मैसिव बिग साइन यू नीड हेल्प एंड यू शुड सीक हेल्प। Also, I think I'll be winding up now, but I must say you've been a wonderful audience. Thank you so much for actually um, helping through, giving me a lot of constant encouragement through your comments. And lovely, you can, in fact, I'm there on Instagram. You can follow me. My handle is @brightcounseling. अगर मेरे से और भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, पूछना है तो abrightcc@gmail.com में ईमेल कीजिएगा। I'll be more than happy to help you with the same. And with that, over to you. Thank you so much for inviting me over. It's been a pleasure. I'm open to questions now. Okay. Again, we have a great gratitude for your beautiful presentation. आपने बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल कनेक्टिंग स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें बताई। और अब हम जो अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इफ़ दे हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप फटाफट पूछ डालिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे शो हो रहा है, आई एम एट 23, आई एम गोइंग थ्रू क्रॉनिक स्ट्रेस, इश्यूज आर मैनी, फिजिकल मेंटल दोनों तरह से सफ़र कर रहा हूँ, व्हाट शुड आई डू मैम और सर? मैम। Okay, so I think this is Gaurav. No, यस। Saurabh, सौरभ। sorry. Saurabh. Saurabh. Hello, Saurabh. So आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आप एक मेंटल हेल्थ काउंसलर से मिलिए। आप पूछिए कि आप एक्सट्रीमली क्या फ़ील कर रहे हैं, स्ट्रेस है या एंग्ज़ायटी है या डिप्रेशन है। अगर आपको बहुत ही दिनों से ये चीज़ चल रहा है तो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड सीक अ मेंटल हेल्थ काउंसलर। मगर आपके पास अगर फाइनेंशियली एड इतने ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली you know, you should you should probably do some deep breathing when you're experiencing a lot of stress. Also, जब आप बैठे हो, मतलब आप अपना टाइम 5 मिनट एटलीस्ट जब अपने लिए निकालोगे, आप अपने बॉडी में फ़ील करिएगा कि किधर-किधर क्या-क्या सेंसेशंस हो रहे हैं, क्या-क्या फ़ील कर रहे हैं, एंड उसको सब अगर आप बोल नहीं पाते हैं तो अ, एक पेपर पे लिख के उसको राइट डाउन ऑल द कंसर्न्स दैट यू हैव एंड मेक श्योर दैट अपने दिमाग से निकाल के वो पेपर में आप अपने को पोर कर रहे हैं। एंड आप जितना हो ट्राई टू स्पेंड इन द नेचर, try to spend away from the phone, try to spend away from anything that troubles you. सिर्फ 10-15 मिनट आप हर दिन आप नेचर के साथ रहिए एंड इट हेल्प्स अ लॉट। इट हेल्प्स टू सी द बर्ड्स, इट हेल्प्स टू सी द ट्रीज। सब थोड़े से ग्रीन के साथ में बैठेंगे तो भी चलेगा। ओके, डू वी हैव मोर देखिए क्वेश्चन? एक दो कमेंट और है मैम, इफ यू आर एबल टू सी द कमेंट। व्हाट इज द स्कोप ऑफ लेकिन क्वेश्चन आए हैं women हमारे पास। and mental health in the career? Okay, there is a lot of scope. I am not audible. There's a lot of scope for females in the field of mental health, and I am one of the examples for you. Like, all you have to do, I mean, if you need any help, you can always get in touch with me. I'm Absy Sam, ABSYSAM, and
you can ask me of ways that you can go through. I'll be happy to help. Or else, in a generic term, you can be a counselor, can be a clinical psychologist, you can be a teacher, you can be an academician, you can be a researcher. बहुत सारे options है. Sir, you just have to start. Okay. Um, why do women get more angry than gents? Okay. So that's a very interesting question. Uh, I perceive that anger is a very common emotion. And अगर आपको गुस्सा नहीं आता, then there might be something up. It's a very common emotion that you should experience. You should have a gateway to express this also. कभी कभी क्या हो जाता है, हम सोचते हैं गुस्सा होना गलत बात होता है, ऐसा नहीं होता है. हमारे अंदर बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस हैं, मगर हमें उसको सही जगह पे एक्सप्रेस करना सीखना चाहिए, which is why therapy always helps. And why do women get more angry than gents? It also comes from a place of you know unmet needs, and a lot of expectations on the part of female. And it is always abhi, if you see females getting angry, always ask them as to what they want. Most of the times, most of their emotional needs are not met. All right. Next, while baby carrying, why women is very angry? Wow, nice question. First is emotional aspect, because they experience a lot of hormonal changes. You see, carrying a child is not easy. From first day to the very giving birth, the body goes through massive changes. And it also goes through a lot of mental health concerns, like you are experiencing suddenly mood high हो जाता है, कुछ भी करते करते you can cry. At times you might see something and makes you very excited. It can also make you very sensitive, very touchy also, which is why it becomes very difficult for females at times to express what they want. Why? Okay, ये हो गया. How women can regulate their emotions and manage stress? Very nice question. So one of the ways that you can regulate and manage your stress is not to suppress it. Just because you're a female, don't suppress your emotions. Try to sit with it. And अगर आपको ये कैसा करना है, आप नहीं जानते हो, तो you should seek help. There are very good and amazing counselor. I think sir will also help you with the same out there, who can teach you कि आप अपने emotions के साथ कैसे comfortably deal कर सकते हो. And it is also important that you find a getaway to express it, क्योंकि हमारे जो emotions होते हैं, they are connected, and it always helps to understand what is that emotion trying to tell you. Okay. Any other questions? Hello. Am I audible? Okay, sorry. So, if you want to get a certificate, आपको इसके comment section में ये एक लिंक पिन कर दिया जाएगा, और इसे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो चल रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक से शेयर किया जाएगा जैसा ही वीडियो वाइंड अप हम इसको करते हैं सेशंस को. और इसके अलावा जो है, आप बाद में भी इस वीडियो को लगभग 10-20 सेकंड के लिए ये वीडियो है वो प्राइवेट हो जाती है और फिर ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाती है. वो शायद कोई प्रोसेस है या कुछ भी ऐसा. तो आप इस पर्सनालिटी केयर फाउंडेशन पे लाइव सेक्शन में आके आज के टाइम में इस वीडियो को देख भी पाएंगे, और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं. विद इन 7 डेज हम इसको आपको ईमेल या व्हाट्सएप नंबर वो आप सही से भेज दीजिएगा. एड्रेस वैड्रेस पे हम नहीं भिजाते हैं, ये सब सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा आपको, तो आप अपना प्रिंट करके लगा सकते हैं यदि ज़रूरत पड़े. कई लोग पूछते हैं हमारी क्वालिफिकेशन में इसका कोई बेनिफिट है क्या, तो ये आप रिज्यूमे में या अपना सीवी में थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं कि एक वेबिनार आपने अटेंड किया है, वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं. बाकी डिपेंड करता है आपकी स्किल्स कैसी हैं. यदि ऑडियंस की तरफ से कोई क्वेश्चन रहता है
तो प्लीज़ वो कमेंट में बताएं, नहीं तो हम इसको अभी डिस्पर्स करने की अपनी चरम सीमा पे पहुंच गए हैं। देखते ही देखते समय लगभग 40 मिनट का हो भी गया और हमें पता भी नहीं लगा। I think there are two questions. I'll quickly go over them. Yeah. Do you agree a woman can understand better mental health than men, or different idea? It depends, you see, which is why as a psychologist हम इसलिए ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ताकि हम हर एक को कैसे अपने आप को समझने का जो जो स्किल है वो सिखाते हैं हम, लाइक वी आर जस्ट टीचिंग द क्लाइंट्स हु कम टू अस हाउ टू अंडरस्टैंड देम, how to how to help them understand themselves, their needs. So it is all about training and also about how empathic one is, which also comes with training at times, but it adds if you have that as a skill. uh, so do I agree a woman can understand better women's health? Maybe at times, if a woman is quite aware of their own health, yes, yes. It's just like unless and until you know your ABC, you can't write. Similarly, if a woman does not know her own health, it is very difficult for her to help other clients with their physical health or mental health. Um, by the way, there are some really amazing uh, men who are psychologists who also understand women and men both. So they like it's always a good idea to keep to go to therapy with an open mind. Next, what are some steps which women can take to improve their well-being? One is to stand up for yourself, to be assertive. जहाँ पे ना बोलना है वहाँ पे ना बोलें, अपने लिए हाँ बोलें और दूसरों के लिए ना बोलें is okay. But if you keep on saying no to yourself, you will learn that this is the way to live, and you will keep saying no to your health, no to your mental health, your mental peace, and etc. It eventually affects your health. Then, when you have to go for a regular checkup, kindly do that. If you have to do exercising, you should do that. If you like to do something, अगर आपको वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद है, आप दूसरों को मत देखिए, आप पहन लीजिए। अगर आपको आपको इंडियन कपड़े पहनना पसंद है, you should do that. Do what you like to do. It's just few days of living that you have on this earth. You should enjoy your best and you should live up to your best. कभी ऐसा regrets के साथ जीना is sort of weird, it's bad, and also affects your health that you are not able to live to your fullest just because you're a woman. Um, Next, why girls are not happy without compliments? I don't know about that. I think you're probably talking about a particular girl. However, if you really want an answer to that, you should probably go to that girl and ask her, why are you happy? Why are you not happy with that compliment? Women, how can women express her anger? Because our society doesn't accept her anger in any situation. That is very true. एंगर मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप चीख के चिल्ला के बोलो। एंगर कैन आल्सो बी योर साइलेंस, एंगर कैन आल्सो बी योर वे ऑफ टेलिंग पीपल। आई विल टेल यू, मैं एक ही चीज को चीख के भी बोल सकती हूँ और एक ही चीज को बिल्कुल सिंपली पीसफुली कामली भी बोल सकती हूँ। इट इज अबाउट हाउ आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई विल लेट पीपल नो। ऑलराइट, एंड it is important for women to express their anger also. Just because people don't accept you, they'll shame you. True, ये बात सही है. But do express your anger. There are lots of people who run support groups for women. Find them and find your venting space. If your husband, if your partner, if your parents, your in-laws, your children are not listening to you, it is okay. Try to seek out some help. Some or the other psychologist will be there to help you with the same. How can you help the issue of eating disorder? It comes to a lot of concerns. Firstly, it is about body image, and second is there are lots of societal issues societal issues also which we need to see. Again, that is a customized answer, but I'm just giving a very generic output. Gratitude for the beautiful effort and depth. And oh, Chess, it's my pleasure. Does validation affect mental health? Oh yes, massively yes. Massively, yes. Validation affects mental health of individuals. So just imagine if I'm saying, "Hey, I am hungry," and someone says, "No, you're not hungry. You're just making it up. आपको भूख नहीं लग रही है, आप just
बना रहे हो आपके मन में, आप फ़ोन यूज़ करते हो ज़्यादा इसलिए आपको लग रहा है आपको भूख लग रही है, ऐसा नहीं है। अगर आपको भूख लग रहा है तो यू आर हंग्री एंड it is always said if I am able to understand myself, it is easier for me to make others understand me. And even if others are not understanding, it's okay. At least I understand and I respect and I love myself. All right. I guess that's about it. Like I said, you can always connect to me if you have any question. It's not paid. You can always connect to me on Instagram at Bright Counseling. So you can ask me n number of questions. I think we are bound by time at this point, and sir will also have to leave, and I'll also have to leave. It was a pleasure. And again, we would like to pay a beautiful thanks for this questionnaire session Q&A. आपने बहुत ही बढ़िया शालीनता से और मतलब ये लगने ही नहीं दिया कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर टॉपिक से हटके है। हालांकि कुछ लोगों ने ऐसी कोशिश की है कि वो टॉपिक से हटके दिया, लेकिन फिर भी आपने उसे इस तरीके से आंसर दिया। मैम, यू डोंट टेक माय क्वेश्चन। श्रेया पांडे, क्या क्वेश्चन है आपका? ऐसे आप रोइए मत, फटाफट टाइप करिए। कितने उदास हो गए हैं आप? Yeah. I think थैंक I यू answered. मैम। नीचे बहुत सारे, हाउ कैन वैलिडेशन प्रॉब्लम बी सोल्व्ड? तो I ये told you इन्हीं का सवाल है। validation can see most of the times validation is not present. किसी को अभी देखो, I'll tell you, if you cry in front of someone, some or most of people will say मत रो रोना नहीं, please मत रो please. But if you go to a psychologist, that मत रो will not be there. They will let you sit with it. They will let you understand it's okay to cry, it's okay to feel bad, it's okay to get angry. I guess one of you were also asking me about anger, and that is the best thing about therapy. The therapy is also about validation, so which is why by the way, validation is जिनको नहीं मालूम, validation is basically trying to affirm किसी चीज को हम कंफर्म कर रहे हैं। अगर आपने वो चीज फील किया वो सही है। अगर अगर आप समझते हैं कि रोटी गोल है तो वो गोल है, कहीं और नहीं, आई मीन कोई और शेप नहीं है। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, आई गेस सेम पर्सन, ऑलराइट। How to get over failure guilt, especially when you're a girl and you know you're already thought of it as a weight. Ah, lovely question. First of all, this is an internalized dialogue. जब भी जब आप बहुत जगह से सुनते हैं कि लड़कियां भोज हैं, अ, पराये धन है, तो अपने को भी लगता है कि हम आई एम नॉट अप टू द मार्क, आई शुड डू आई मतलब अब अभी भी मेरे को किसी के घर जाना है एंड आई हैव टू सॉर्ट ऑफ बी यू नो आई हैव टू डू दिस एंड दैट। मगर आई टेल यू व्हाट, देयर आर लॉट मेनी सक्सेसफुल women out there, and one of the best ways to be successful is know your worth. अगर आपको वो चीज वर्थ बाकी और से नहीं मिल रहा है तो I'm sorry, I'm not trying to sell therapy, but one of the best ways to get self-worth high is therapy. अच्छे काउंसलर्स हैं जो आपको आपकी जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके स्ट्रेंथ्स हैं, आपको समझाएँगे। आपको भी नहीं पता चलेगा कि ये मेरे स्ट्रेंथ था कि नहीं। And that is what one of the best things about therapy, which is why I always say, um, go for therapy. And as a female, I'll tell you what, वहाँ अपने सर पे बहुत कुछ बोझ होता है। लाइक पहले तो हम खुद भी ले लेते हैं, दूसरा हमारे सर में भी डाल देते हैं। मगर अपना वर्थ हम जब जानेंगे तो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू से नो टू थिंग्स जो हमारा नहीं हो। मैं आपका बोझ क्यों लूँ जब जो वो मेरे से रिलेटेड ही नहीं है। अब उस चीज़ को हम जब मना करना स्टार्ट करेंगे, तब हमको मेंटल पीस होगा एंड दैट इज़ व्हेन वी विल फील लाइक नो, आई कैन स्टैंड अप फॉर सेल्फ। या मैम मेरा इंस्टाग्राम राइट काउंसलर, सो BRIGHT OUNSELLING. Counseling is not free, true. Nothing in this world is free, my dear. Not a single thing. Nobody will come and give any counselor free में food just because it is food, right? We need to put a lot of effort, and जैसे काउंसलिंग दिखता है हम समझते हैं इतना इजी नहीं होता है, इसमें बहुत सा काम होता है। अगर आप 1 घंटे अपने काउंसलर के पास बैठे हो, उस आपके
वो 1 घंटे के लिए वो 5 घंटा एक्स्ट्रा बैठता है। तो ऑलवेज़ अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। आई नो इट्स वेरी ईज़ी किसी के साथ बोलना, किसी के साथ सुनना, हम एडवाइस नहीं देते हैं किसी को, मगर हम उसके साथ बैठते हैं, उसको अपना जो प्रॉब्लम्स है उसको समझाने की कोशिश करते हैं, जो एडवाइस नहीं होता है। Next, how can women analyze their strength, especially if person is in confusion state? Seek therapy. You will get clarity of mind. Um, yes, that's it. And also there are if you're really looking for, like, if you cannot do any way out, there are pro bono options also. Hit me up. I'll tell you some therapists who are very genuine and who also give free therapy. So please don't take advantage of them. They're doing it out of their good heart. But I'm just letting you know, agar there is no way out that you can pay them, um, you can just message me. I'll guide you to them. All right. I guess that's Right. it with the questions. यस, और ये जो फ्री वाला है, मैं श्रेया को या अपने ऑडियंस को बताऊं, मेरा स्टैंड पॉइंट पहले ये था कि हम लोगों की फ्री में हेल्प भी करें, और मेरा आप पुराना वेबसाइट पे जाएंगे rajalampur.in पे, और वहाँ पे 10 से ज़्यादा काउंसलर हमने कोविड में रखे थे कि वो बोले कि हम सोसाइटी के लिए समर्पित हैं, बस हमें लगा दो और ये कर दो वो कर दो। मैंने उनको लिस्ट किया, और आपको जान के बड़ा अजीब सा लगेगा, मतलब ये पब्लिकली मैं बता रहा हूँ, और ये बहुत अजीब बात लगी हमें कि वो 10 काउंसलर जो है वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, और नंबर ऑफ केस उनके पास करीब करीब 40 थे, मतलब 10 लोगों के पास। और दूसरी तरफ मेरा पैकेज था, और मैंने उन्होंने लगभग इतने समय में 40 लोग देखे, और तब तक मेरे पास लगभग 350 रजिस्ट्रेशन थे, और ये सारे पेड थे। तो कई कई बार क्या है, बिल्कुल फ्री हो तो उसका वैल्यू भी कम हो जाता है, बट कुछ लोग हैं फिर भी दिल से वो हेल्प करना चाहते हैं। यदि आप समझदार होंगे तो डेफिनेटली मैं तो ये भी मानता हूँ कि पैसा दे के भी यदि चीज़ें ठीक हो जाएं तो बहुत अच्छी बात होती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसा फिर भी बन जाएगा। लेकिन हेल्थ ही चली गई तो बहुत सारी चीज़ें फिर चली जाती हैं उसके साथ। एंड लिटरली ये फ्री इसलिए भी नहीं है कि ये हमारा प्राइमरी काम है। वी आर नॉट एडवाइजर कि हमने ज़िंदगी जी और हम अब जाते जाते दुनिया को कुछ दे के जाएंगे कि हमने तो ऐसा जिया। इस टाइप की काउंसलिंग में चीज़ें रहती नहीं है, बल्कि एक Or बहुत ही I'm sorry, I'm going to interrupt you. नहीं, टेक टेक थेरेपी एज एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी चीज को भी इन्वेस्ट करते हो, फ्यूचर टर्म्स के सोचते हो ना, आप लाइक एफडी डाल रहे हो या घर पे परचेज कर रहे हो, तो आप यू पे इन सम अमाउंट, राइट? दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपका मेंटल हेल्थ ऑन पॉइंट रहेगा ना, यू कैन डू एक्सट्रीमली वेल एट ऑल द प्लेसेस। जो भी आपका जो लेस प्रोडक्टिव एरियाज है, लाइक फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ये सब थेरेपी में एक्चुअली कवर करते हैं, and you can get a lot more help. Up, you will feel like a free bird. Yeah, but whether it be small concerns or big concerns, it's about the person, you know. The professional is there. Like आप अपने डॉक्टर के पास दांत दिखाने जाते हो and they just tell you that you're, oh no, it's okay, it's just a small you know, that the tooth is coming up and it just needs a little fixing. You know, अरे छोटा सा ही है, मैं कर लूंगी. You can't say that, right? So it's about the professional and how they can help you. Of course, the sessions are about client, which is why we have clients, which is why we take therapy. मगर अगर हर ही कोई सर्जरी कर सकता है, हर कोई ट्रीटमेंट दे सकता है, तो why should we have psychologists or doctors in place? All right. I think we'll have to to just finished. yeah, we'll conclude. Yes. If you So have questions, you can ask sir. He'll help you with my Gmail. You can always hit me up with questions. सो हम भी यही उम्मीद करें, होस्ट लिविंग विद रिगार्ड्स टू स्पीकर एंड होस्ट 3 मिनट। ओके, सो हम सबसे पहले Well, तो मैम ने बिल्कुल ये बात हुई थी हमारी कि आज हम 20 मिनट तो बात करेंगे, लेकिन देखते देखते 2-3 बार 20 मिनट हो चुकी है और वो 1 घंटा ही हो गया लगभग। तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारी ऑडियंस भी लगातार जुड़ी हुई है, और इन ऑडियंस का भी हम शुक्रगुजार हैं, और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने समय दिया और आपने वैल्यू ऐड की,
और ना सिर्फ थेरेपी प्रमोट करने की बात है, बल्कि आपने रियल एजुकेट किया है। जहाँ पे ज़रूरत पड़े थेरेपी की तो लेनी ही चाहिए। और आपने इनडायरेक्ट वे से बहुत सारी चीज़ें लोगों को दिमाग को क्लिक करेंगी कि हाँ, उससे थोड़ी अवेयरनेस भी आएगी। और इस तरीके के सेशन को आपने अंजाम दिया, ये हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए उम्मीद है कि वो बहुत बेहतरीन होगी। मैडम की आवाज़ सिर्फ 50-100 लोगों तक जाने की बजाय आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि इस पूरे 1 घंटे के करीब 1 घंटे के सेशन में आपने एक बात भी आपके जीवन में यदि वैल्यू ऐड होती है, तो आप इस वीडियो को कुछ लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। बहुत सारे लोग कुछ न कुछ कचरा किसी को भेजते रहते हैं, किसी दिन अच्छी चीज़ भेजिए, शायद किसी की ज़िंदगी बदले, किसी के जीवन में बदलाव आए, शायद किसी की एक बात जीवन में उसे बहुत आगे ले जाए। कहते हैं बड़ी बातों से जीवन नहीं बदलता, एक छोटी बात को इम्प्लीमेंट करने से जीवन बहुत ज़्यादा बदल सकता है। इतनी देर है मैडम, आप शुक्रगुजार है, हमारी ऑडियंस का शुक्रगुजार हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक ऐसा ही कल एक सेशन हो रहा है और हमारे बीच में हमेश सिंह यादव जो पूरे नॉर्थ इंडिया के एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में जाके अब काम कर रहे हैं, वो कल इंट्रोड्यूस करेंगे। और काफ़ी लंबे समय से उनसे बातचीत चल रही है, 1 महीने के बाद उनका टाइम मिला और कल वो हमारे बीच में लाइव होंगे। आप इसी यूट्यूब चैनल से उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जो लोग हमारे साथ एक बार भी रजिस्टर कर लेते हैं, बार-बार फॉर्म हम कुछ भी नहीं भरना होता उनको, हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं और बार-बार वो हम उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं कि अब नया वेबिनार आ गया है, अब ये आ गया है। और निश्चित ही हम इनकी कोई इनडायरेक्ट फीस भी नहीं लेते हैं। मैडम ने भी एक सोशल कॉज में वैल्यू ऐड की है। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रगुजार। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। अभी सर्टिफिकेट का लिंक हम ऐड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।